Aviation pays off. So, good afternoon everybody or good morning to all. I hope कल का weather सबने enjoy किया होगा and खास तौर से Delhi, Noida, NCR guys, keep yourself very safe because I am hearing continuous earthquakes are coming in your region. Okay, so welcome again guys. I hope last session आपके लिए थोड़ा सा challenging रहा होगा and moreover I think मज़ा बहुत आया होगा. कैसे बनाए, किससे बनाए, क्यों बनाए, बनेगा कैसे, टूटेगा तो नहीं. See, I was getting a lot of questions from students on mail, on chats कि we are not able to figure out bottle से बनाए, किससे बनाए, क्या करें. Like you can do guys, see, I have given you full freedom, right? I have given you full freedom. I just want to see a glider, right? So one question I got from one of my students, like sir, we have to make a RC aircraft or a glider. RC aircraft stands for radio controlled aircraft. That means it will be having a motor, battery, control surfaces, servo motors and all those stuff. What I asked you is to make a glider, 1 meter wingspan glider. But few students said that they had problem with arranging materials. They do not have adequate material at their homes and they are not able to figure it out how to make it. So at the end of the last video, I told you guys that I have given a max limit of 1 meter wingspan. 1 meter wingspan means आप 0 से लेके 1 meter के बीच में of any size, any fabrication you can do it. But to pass this assignment, your glider should fly at least 20 seconds. अब चाहे आप उसे छत से फेंक के उड़ाओ, चाहे आप उसे एफिल टावर से उड़ाओ, it's your wish. It should fly at least 20 seconds properly. Okay, so this is your task. I have made it more simplistic. You have to make a glider from trash. It should have a maximum wingspan of 1 meter. It can be less than that. There is not an issue from my side, but it should fly minimum of 20 seconds. Okay, so that was a short recap of last session. I hope this is clear to you guys. And those who have not attended the last session, not a problem. I have already said this is a recording session or this is a live session. You can see these sessions after it gets ended. It will be available on YouTube. Okay, so there's no need to worry. If you are not able to attend the class, you can watch it whenever you are free. Okay, so today's session is about aircraft maneuvers. Okay, and this will be the most exciting, most amazing class of the entire session, because here you will be knowing about tips and tricks of flying an aircraft, how to control an aircraft, how to do stunts with your paper airplanes or your glider, or how you can perform trick shot at your home. This is a very fun loving event. I'm practicing it from last 1 week and I'm really enjoying it. I'm totally enjoying this particular session. I have my quads flying in the evening time. I have my paper airplanes of different designs flying in the evening time. So I'm really enjoying it, guys. I hope after this session, you can also make your particular aircrafts and you can fly it. Like glider, I mean glider, paper airplanes or gliders. Okay, and few of the people are still asking me ki, can we make a propeller or a rubber band? You can use a rubber band. See guys, you can use a rubber band to throw your aircraft, to launch your aircraft, but you cannot use a propeller or any kind of propulsion method to drive your aircraft in the air. It should be hand tossed totally, or it can be rubber band powered launch, not rubber band powered propulsion. So make it very clear, it should not fly with the help of rubber band. It can be launched with the help of rubber band if you wish, but still it should sustain a flight of 20 seconds with its own. Okay, and you cannot use a rubber band or a propeller. Mr. Krishna, again and again I'm telling you this thing, do not poke the chat on the same question, right? You cannot use a rubber band and a propeller, active propeller in the glider.
glider doesn't have a propeller. If you see it on the YouTube or if you see anywhere on the internet, you won't find any glider with a propeller. Gliders are always powered with crosswinds, okay, or airlifts. That's it. Hand tossed or tug propeller, tug gliders. What we do is we tuck a glider behind an aircraft. Aircraft take the glider in the air and just release the rope, release the attachment, and as soon as it releases the attachment, it starts to flying on its own. Okay, so I hope this thing is particularly clear to you guys. Yeah, you should not have to make a powered glider. You should have to make a hand toss glider or a glider that can be launched with the help of a rubber band. Okay, I hope this is clear. You can make a glider with metal. You can make a glider with any kind of thing, titanium, vibranium, Wakanda, anything. I don't have any problem. Okay, so stop putting the silly questions ki kaise banaye. It should be a trash from your home. It can be a reusable material. It can be not used material from your side. You can use any kind of stuff. Even you can use Captain America's tawa. So it's totally your call. Okay, I am totally free from this thing. So do not repeat this question again and again. Ye kaise banaye, kisse banaye, and all those stuff. Okay, I hope this is totally clear. So we have invested more than 5 minutes in this particular chat, so we'll begin with our today's presentation. Okay guys, and आज आँख और कान खुले रखना. सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी इसमें. आई कैन बेट यू गाइज, एक दो चीज़ें पता होंगी हो सकता है, बट नॉट द एंटायर पार्ट. सो कीप योर सेल्फ टोटली रेडी विद दिस सेशन. दिस इज very important and very fun loving for guys who love flying aircrafts, who want to fly their own aircraft, who want to build an aircraft, who want to be a pilot in future. This is for you guys. Okay, so let's get started. So the title of today's session in deep is Procedure to Fly an Aircraft and Understanding Maneuverability. अब जिसको ये नहीं पता है, if they are not able to pronounce this word maneuverability, try Google. Okay, this is not your English class. So procedure to fly an aircraft, pre-checks क्या है, flight safety checks क्या है, कैसे fly होता है, starting क्या होती है, and what is the procedure, what are the radio calls. ठीक है, I'll not be talking about the radio calls to be very precise, but yeah, I'll give you a hint कि how does a pilot communicate to the ATC, the air traffic control. Okay, so first thing first, always flights pre-checks. अब flight pre-checks क्या होते हैं? For example, imagine you are harnessing that Captain America suit, the pilot suit. Okay. Not Captain America, the pilot suit. Okay, the pressure pilot suit. So going from your home or going from your cabin to the hangar where your aircraft is waiting for you to have a particular flight. Okay, so what are the steps to start the engine? Like you cannot, it is not your car कि गए चाबी डाला and start किया और चल दिए, right? You have to take proper permission. You have to do the proper paperwork before starting an aircraft. You cannot just go and it is not GTA 5 कि गए canopy खोली घुस गए और you are flying an aircraft. This is not the way. Okay, so today I'll be telling you about the procedure to fly an aircraft and what are the flight pre-checks or safety checks before you start an engine. Okay, I hope today's sound is not creating any problem for you guys. Okay, so no pings about. Done. Okay, first thing first, always maintenance log should be taken into consideration.
इफ यू आर अ रेगुलर पायलट, यदि आप रेगुलर फ्लाइंग करते हैं, सो मेंटेनेंस लॉग आप एक आपकी हैबिट बन जाती है. इट्स एन हैबिट फॉर यू टू चेक योर मेंटेनेंस लॉग्स बिकॉज यू डू नॉट वांट टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट दैट इज नॉट कंप्लीटली मेंटेन्ड. प्रॉब्लम क्या होती है, ये दिस इज नॉट अ कार, राइट, और दिस इज नॉट अ बाइक कि ब्रेक फेल हो जाए सो यू विल बी एबल टू हैंडल इट विद सम अदर maneuvers or some other facilities from your system so that you can stop that vehicle. This is an aircraft. If something goes wrong in mid of the air, there are only two ways remaining for you. If you can able to take back control, that is good. If you're not able to take back control, you have to crash that aircraft into a safe location to minimize the casualty and eject it on time. Right, so maintenance log is very important for every aircraft. Once you become a pilot, this will be an habit to you guys, or if you are a drone pilot, if you are a UAV pilot, this will be an habit. This should be your habit to always check your maintenance logs or always maintain a log at least कि आपने कब last time propeller change किया था, and when was your motor cleaned, when was your hardware cleaned, all those stuff, right? Then manual inspection is necessary. Second step, manual inspection. What is manual inspection? For example, you are a pilot of Sukhoi 30 MKI in Indian Air Force. Okay, your Sukhoi is resting in the hangar. You have just completed your maintenance log check and all those stuff, right? And you have talked to the engineering team who is taking care of that aircraft. You are going to that Sukhoi 30 MKI and you have to take a look, 360 look around the aircraft. Wing proper है, properly उनके exhaust cleaned है, your fuel refueling has been done properly, there is a proper adequate weight of fuel there is no leakage or a failure of hydraulics, every system is working totally fine. That is called a physical manual inspection, right? This is the first, second and third step combined, manual inspection and physical checks of vitals. Vitals का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स का मतलब क्या है? लंग्स, heart, your pancreas, your stomach, all this stuff are vital organs. So for aircrafts, vital organs are their engine, their control surfaces, right, their sticks, their electronic sigma, their instrument panel, all those stuff, your probes, your airspeed meter, that is the crucial part of the aircraft, right? So these things had to be physically inspected by the pilot before taking off, right? Then checks on electronics and controls. हल्का सा बैटरी पावर पे डाल के एयरक्राफ्ट को और जंप स्टार्ट करके एयरक्राफ्ट को, पायलट ऑलवेज चेक्स द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल कि सारे अपर्चर रडार्स, कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग मैकेनिज्म, योर रडर, योर एलिवेटर, एलरॉन्स, फ्लैप्स, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट. These are the checks on electronics and controls. Then comes the transmission and radio check. Always a pilot is having a call sign, right? You might have heard in movies, if you have seen the Air Dagger movie or Enemy Behind Lines, right? Behind Enemy Lines, sorry. So these movies or some other movies like Top Gun of Tom Cruise, they have some vital call signs, right? कि aircraft की कभी pilot के नाम से बात नहीं होती. He will not say like this is Ramesh from Sukhoi 30 MKI contacting ATC tower and blah blah blah. This will never happen. You'll have a predefined radio sign like this is Black Thunder 131, this is Black Tango 221. This kind of radio signs would be there for every aircraft pilot, right? So you have to contact your ATC, your nearby ATC or your base ATC with a particular frequency on your radio sets. You have to stay tuned, you have to tune your radios to that particular frequency on which you will be communicating, and then from that call sign you'll start the procedure for taking permission of takeoff. Then you'll notify them that you have done all the flight safety pre-checks, and after that you are totally eligible to fly, right? So these are the total permissions before you can kick off your engine, right? You cannot even start your engine before taking permission from ATC. This is a proper protocol for airliners, for jet fighter pilots, for everybody, right? Even if you're a hobby pilot, if you own a Cessna, you have your private aircraft, you have to take a permission from ATC. What will happen if you don't take permission from ATC? Simple, मैं आपको बताता हूँ simple language में. If you do not take permission from ATC to fly, if you fly in the air, it can be a threat. It can be a terrorist attack. It can be a plane hijack situation. It can be a non-authorized
paramilitary or military ops from some other enemy countries. So to avoid all these things, to get into disputes, there is always intimation from pilot side to the ATCs. Like I am flying from this particular flight path, आज मैं यहाँ से यहाँ उड़ूंगा, I'll do this maneuvers and return back to base by this particular time set. If so, everything is totally fine. So these are the flight paths, flight checks, and every particular important step before taking off the engine, right? Taking like switching on the engine. And as soon as all these things have done, we start the engine and we are ready to take off. We just taxi it. The proper word from hangar to runway, जो एयरक्राफ्ट हैंगर से निकल के रनवे के साइड जाता है, इट इज कॉल्ड डूइंग अ टैक्सी. ठीक है, इट्स अ टैक्सी. दिस इज अ वर्ड कॉल्ड टैक्सी. दिस इज नॉट योर येलो कलर उबर और ओला टैक्सी. दिस इज term that means that aircraft is going from hangar to the runway for a takeoff. This is called being taxied. Okay, so these are the 7 flight safety checks or flight pre-checks before you can take off, right? Now curiosity थोड़ी सी increase करते हैं. ठीक है, theory हो गई complete. This was the theory for today's session. There is no theory, there will be total practical based or the animation based learning today. Okay, this is SAP Jazz 39 Gripen cockpit. Fighter pilot of European nation, right? A NATO aircraft. And आपको एक नॉलेज ट्रिविया बताता हूँ, खासतौर से रशियन एयरक्राफ्ट्स और द नाटो, जो नाटो सेना है हमारी, where all the friendly neighborhood countries have formed an allied forces for UN. These are called NATO forces, NATO, NATO. And in all the aircrafts that is serving NATO are called flankers. ठीक है, this is a common radio check sign or a call sign for all the aircraft that is working for NATO. It's called flankers. Okay, so this is a cockpit of a fighter pilot or a fighter Jazz 39 Gripen. ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखता है. This is so sophisticated. ठीक है, and if you see the joystick is in the center. जॉयस्टिक मे बी शायद आपको याद होगा, फॉरवर्ड पिचिंग, बैकवर्ड पिचिंग, लेफ्ट मोशन, राइट रोल मोशन. फॉर दिस वी यूज द जॉयस्टिक, राइट? एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड you will see a handle, just like what we have discussed in helicopter session. This handle is for controlling your thrust, the aircraft thrust. अब this is not a chopper, remember this thing. This is not a chopper and this is not a vertical takeoff landing aircraft, just like mixed series Navy models, right? This is a normal jet fighter which needed to be take off using a runway. So this handle, this throttle handle would control the flow of thrust from the back of the engine, right? So those who guys have attended the helicopter class or the chopper class, they might be knowing ki what is this exactly called, the code name of this particular handle. And rest, there are 2 paddles for rudder control at the bottom, right? You can see in white color this particular thing, if you see the mouse pointer, right? This one. So let me show you the Jazz 39 Gripen. It looks like something like this. It is similar to Dassault Rafale, but this company is different. This was the first, this was an automobile company back in 19s, and after that it became a company of defense and manufacturing of defense weaponry, right? So this is the name of the company, SAAB, SAB, and the name of the aircraft is Jazz 39 Gripen. Okay, JAS 39 Gripen. C also, Gripen C, right? So this is how it looks like. This is the fighter jet that is commonly used in European countries. Okay, now a closer look of another jet cockpit. I hope my mouse pointer is visible to you guys. Let me check it again. Yes, capture cursor. And whomsoever this is first class, do not worry guys, just go back to the playlist and view all the videos from starting the first lesson and then come back to this session so that you will be able to know what exactly we are doing right now.
Okay, so just follow my mouse cursor right now. This is the joystick where you have all the firing controls, right? And you can maneuver the aircraft forward, backward, left and right with this joystick. Okay, in technical language what we call is high nose, low nose, forward pitch, back pitch, left roll and right roll. Okay, these are the common technical terms. Second one you can see is the throttle of the aircraft, the throttle control or the throttle lever. Okay, and whenever you push that particular lever in the front, जैसे ही आप आगे पुश करना शुरू करोगे, whenever you start pushing that lever to the front, जो engines हैं पीछे के, जो turbofan engines हैं, it will start blowing exhaust air outside. It will take in the fresh air, burn it in the compression chamber and throw the exhaust gases outside. उससे क्या होगा? The same Newton's third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction, right? हर एक क्रिया की विपरीत समांतर प्रतिक्रिया होती है हिंदी में, right? This is very typical. जिनको नहीं आती इतनी अच्छी हिंदी, I think they should learn it right now, because this is something we have from our heritage. Okay, so this throttle, ये जो throttle lever है आपका, this is for controlling your thrust. यदि आप देखो वहाँ पे कुछ markings हैं, there are some markings, right? Half throttle, then full throttle. So pilot can have a maneuver control. उसके बाद सामने आप screens देख रहे हैं, these are the instrument panel, right? और यहाँ पे एक आगे target control panel होता है आगे के साइड ग्लास पे. यदि आपको मैं लास्ट इमेज दिखाऊँ, this image, where you see all the instrument readings, proper instrument readings and all the target control readings. जब आप lock on करेंगे, जब आप किसी के साथ dog fight में जाएंगे, so all those things will be seeing on that particular screen. Okay, and these are the rudder panels. You can see these paddles, right? So maneuver के लिए जो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, वो जो combination ज़रूरी है, that is the rudder control, so that you can go like this motion. ठीक है, yaw motion. शायद किसी ने पूछा भी था कि what is the difference between yaw motion and roll motion. ठीक है, आज मैं आपको फिर से बताऊंगा what is the total thing is. So the paddle control, this one, this behind thing, this is called rudder. If you are able to see this is rudder. Okay, ये paddle आपके rudders control करता है, left and right motion. जो आपकी joystick है, joystick will control this one, your ailerons. ठीक है, and if it is having a tail, horizontal control stabilizer, तो you will be controlling your pitch. ठीक है, pitch means nose up, nose eye, this one, nose down and nose eye, this thing, जिसको आप लोग आम भाषा में नीचे और ऊपर जाना बोलते हैं. This is the same thing that will be controlled by your joystick. So joystick will be controlling two motion in total, a roll motion, ठीक है, and forward pitching and down pitching, this one, up and down motion. ठीक है, so left right ऊपर नीचे का जो कंट्रोल है, that is for ऊपर नीचे का मतलब for pitching, this one, elevator pitching. ठीक है, not for throttle pitching. अब जब कभी भी आपको ऊपर जाना होता है, तो you cannot just pull the lever back and you can go on mid throttle or zero throttle, right? What you have to do is you have to push the aircraft from behind. So for that purpose you have to engage your throttle also. So throttle का जो calibration है, it is always with the joystick. ठीक है, there is never in a fighter jet or a proper airline में तो at least autopilots use होते हैं. Fighter jets में ये होता है कि throttle control और आपकी joystick control always mix करके use की जाती है. They are always mixed for using purposes. None of the control has been used properly idle position. मतलब कोई भी एक चीज़ अकेले use नहीं करते, उसका हमेशा combination use होता है for maneuvers. ठीक है, तो हम जब maneuvers की बात करेंगे तो I'll give you more insight about this particular maneuverability. Okay, so for maneuverability you have to see this. This is the normal takeoff procedure. ठीक है, this is the normal takeoff जो आप लोग एयरलाइंस में फील करते हैं. For fighter jets you feel, well, the fighter jets are scrambling, right? Scrambling is another technical term. If you want to note it down, you can note it down. Scrambling of aircraft means taking the aircraft from the hangar to the runway and taking it off
the runway is the total procedure is called the scrambling of jets or scrambling of fighter jets. स्क्रैम्बलिंग का मतलब ही होता है कि हम इमरजेंसी सिचुएशन में इंस्टेंटली एयरक्राफ्ट को लोड करके तुरंत उसे टेक ऑफ के लिए तैयार कर लें. दिस इज कॉल्ड स्क्रैम्बलिंग. ठीक है. स्क्रैम्बल का मतलब ही है कि यू आर टेकिंग ऑफ इन हसल, फास्ट अप्रोच ऑफ टेकिंग ऑफ. सो दिस इज अ नॉर्मल टेक ऑफ. अब ये नॉर्मल टेक ऑफ होता कैसे है इसको समझो. ठीक है. कंसीडर दिस बेसिक एयरक्राफ्ट. ये आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हो, काफ़ी लोगों ने बनाया भी होगा. Right now if you see there are two controls here. This one. ठीक है. इस प्लेन के हिसाब से this is its elevator also and for this configuration it is its ailerons also. ठीक है. ये इसके aileron की तरह भी काम करता है and ये इसके elevator की तरह भी काम करता है. This is a mixed configuration. मिक्स कॉन्फ़िगरेशन में एलेरॉन्स और एलिवेटर को अलग अलग ना बोलते हुए हम उसे एलेवॉन्स बोलते हैं. एलिवॉन्स. एलिवॉन्स का मतलब है एलिवेटर प्लस एलेरॉन्स. ठीक है. तो एलिवॉन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एलिवॉन्स है, देयर इज नो डिफरेंट एलेरॉन और नो डिफरेंट यू कैन सी एलिवेटर. सो बोथ द कंट्रोल्स आर मिक्स्ड इन दिस टू कंट्रोल सर्फेसेस, दिस वन. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एलिवॉन्स. ठीक है. अब जो आपकी नॉर्मल एयरक्राफ्ट है उसमें तो अलग अलग कंट्रोल होते हैं. सो हाउ इज इट एग्जैक्टली फ्लाइंग, हाउ इज इट टेकिंग ऑफ. मैंने आपको बताया था कि लिफ्ट फोर्स जब तक आपके रेसिस्टेंस ड्रैग से ज़्यादा नहीं होगी तब तक यू कैन नॉट टेक इट ऑफ. ठीक है. फ्रॉम लास्ट लेक्चर्स. अब कंट्रोल सर्फेसेस कैसे काम करते हैं उसको टेक ऑफ करने के लिए. जैसे ही वो क्रूज स्पीड पे आता है, दैट इज 120 नॉटिकल माइल्स, हल्का सा पायलट पीछे के एलिवेटर्स को, ठीक है, हल्का सा बैंड करता है लाइक दिस 5 to 10 डिग्री. ऐसे एयरक्राफ्ट सीधा जा रहा है जब तक आपके कंट्रोल सर्फेसेस सीधे, एंड एज सून एज इट पिचेस अप इट स्टार्ट्स टू नोज हाई. दिस वन नोज हाई शुरू हो जाती है. ठीक है. सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर फॉर टेकिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट. नॉर्मली इस तरीके से हम ऊपर लेते हैं, बट देयर इज अनदर प्रोसीजर इन स्पेशली यूज इन फाइटर जेट्स इन काइंड ऑफ इमरजेंसी, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री वर्टिकल टेक ऑफ. ठीक है. दिस इज 90 डिग्री वर्टिकल टेक ऑफ. It is always used in a part of emergency, and the aircraft had to climb at least 20,000 feet within next 2 to 3 minutes. So for climbing up to 2 to 3 minutes in 20,000 feet of height, you should need to pull your thrusters totally up. Thrusters पूरे up करने का मतलब है कि आप full 100% throttle पे प्लेन को फ्लाई करने वाले हैं. इनिशियली क्या होता है, जब भी हम एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं तो रनवे के टाइम पे हम थ्रॉटल्स फुल रखते हैं, उसके बाद थ्रॉटल मिड पे कर देते हैं या स्लाइटली 70-80% पे कर देते हैं, फुल नहीं रखते. लेकिन फॉर क्लाइंबिंग लाइक दिस वर्टिकली, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, हमें इस तरीके से ऊपर उठना है टोटल 90 डिग्री का, तो यहाँ पे हमें थ्रॉटल फुल मैक्सिमम पे चाहिए होता है, so that the lift what is produced and the speed can gets correlated and we do not gets under power, so that the aircraft can get into stalling situation जहाँ पे controls एकदम zero हो जाते हैं. Stall is a situation where controls will become minimum and you won't be able to control your aircraft. वो तब होता है जब आपकी lift force और आपका drag force और आपका thrust force तीनों आपस में equal हो जाते हैं. And if you have thrusters equal, if you have drag equal, and if you have lift force equal or limited or minimum, the plane will fall. That particular situation is called zero control situation or stalling situation. ठीक है. So this is the second example of 90 degree vertical takeoff. इसमें क्या होता है, हम 5 to 10 डिग्री अप नहीं करते, हम इसको टोटल अप कर देते हैं, फुल्ली अप. हम स्टिक को पूरा पीछे खींच देते हैं, एंड जैसे आप स्टिक को पूरा पीछे खींचते हैं इट गोज लाइक दिस. ठीक है. अब स्टिक को पीछे खींचोगे तो प्लेन ऊपर जाएगा. ठीक है. स्टिक को नीचे करोगे तो प्लेन नीचे की तरफ आएगा. दिस इज द सेम सिचुएशन. ठीक है. पीछे करने पे ऊपर जाएगा, नीचे करने पे नीचे आएगा, आगे करने पे नीचे आएगा. ठीक है. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द जॉयस्टिक फॉर टेकिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट. आई होप यहां तक क्लियर है. दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है. अब आता है रोल मोशन, कि रोलिंग कैसे परफॉर्म की जाती है. हाउ डू वी परफॉर्म रोल मोशन, राइट. अब रोल मोशन के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ आपके दोनों एलरॉन्स साइड वाले. ठीक है. अब रोल का मतलब क्या होता है, मान लो आपका प्लेन अभी सिंपल फ्लाइट में है, दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्लाइट. ठीक है. आप सिंपल सीधा जा रहे हो,
You are not turning your path, nothing else. Just a clean, simple straight line flight. ठीक. To perform a roll motion, what you have to do is, what the pilot have to do is, आपको एक एलरॉन ऊपर करना पड़ेगा, एक एलरॉन नीचे करना पड़ेगा. ठीक है, एक एलरॉन ऊपर, एक एलरॉन नीचे, मतलब हार्ड स्टिक. दिस इज कॉल्ड हार्ड स्टिक राइट, हार्ड स्टिक लेफ्ट. दिस इज द कॉल साइन. ये भी याद रखना, नोट कर सकते हो तो नोट कर लो. हार्ड स्टिक राइट, हार्ड स्टिक लेफ्ट. हार्ड स्टिक का मतलब ही है कि द पायलट वांट टू परफॉर्म अ रोल मोशन. ठीक है, हम टोटल 180 डिग्री रोल या 360 डिग्री रोल तभी करते हैं जब हमारे पास कुछ इमरजेंसी होती है. लाइक इफ सम काइंड ऑफ सैम मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल इज फॉलोइंग योर एयरक्राफ्ट, देन यू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ मनूवर्स. अदरवाइज इमेजिन करो 180 लोग आपके एयरक्राफ्ट में बैठे हैं एंड यू परफॉर्म अ रोल मोशन. सबके सरों में सिंचैन जैसा गोला निकल जाएगा, सर में सूजन आ जाएगी लगेज गिरने की वजह से, और आधे से ज़्यादा लोग एक साइड गिर पड़ेंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया. ठीक है, सो दीज मनूवर्स आर स्पेशली परफॉर्म्ड इन स्टंट एयरक्राफ्ट्स, एरोबैटिक्स एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स. ठीक है, सिंपल. रोल के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे ही आप स्टिक राइट करेंगे, इफ यू सी द एयरक्राफ्ट क्लियरली इन द एनिमेशन, जिस साइड का एलरॉन ऊपर जा रहा है, प्लेन इज बैंकिंग टू दैट साइड. एंड व्हाई इज इट हैपनिंग, इसको इमेजिन करना कि ऐसा क्यों हो रहा है. इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जब भी आप किसी मूविंग कार से मुंडी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, या हाथ बाहर निकालते हैं, या ट्रेन से हाथ बाहर निकालते हैं, चलती ट्रेन से, सो आपका हाथ पीछे की तरफ मूव करता है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर. ठीक है, आप इमेजिन करिए कि प्लेन की कंट्रोल सरफेस सीधी है, इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, अब मैं धीरे से एक साइड को ऊपर की तरफ हल्का सा 30-40 डिग्री पे अप स्ट्रेट कर देता हूं एलरॉन को. ठीक है, जैसे ही मैं इसको स्ट्रेट करूंगा तो जो हवा की स्ट्रीम्स लैमिनार थी, जो सीधी आ रही थी, ठीक है, वो अब इससे टकराएगी. इट विल क्रिएट अ ड्रैग फोर्स. ठीक है, यहाँ पे ड्रैग फोर्स क्रिएट होगा एयर का. और न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या होगा कि जैसे यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस इस सरफेस पे बनना शुरू होगी, वो प्लेन को नीचे की तरफ धक्का देना शुरू करेगा. सो जिस भी साइड का टॉप साइड ऊपर की तरफ उठता है, वो हमेशा उसी एंगल पे बैंग करता है. यदि ये आपके व्यू के हिसाब से राइट हैंड साइड है आपका व्यू, यदि आपके राइट हैंड साइड वाला एलरॉन ऊपर है, सो प्लेन विल गो इन द राइट, एंड इफ इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल गो ऑन द लेफ्ट. और यदि दोनों ऊपर हैं सो इट विल टेक ऑफ लाइक दिस. ये ऊपर की तरफ क्लाइंब करना शुरू करेगा. यदि दोनों ऊपर हैं तो क्लाइंब करेगा. ठीक है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो जिस साइड ऊपर है उस साइड बैंग करेगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. एक बार एनिमेशन फिर से देखिए एंड मेक इट मोर क्लियर. यहाँ पे कंट्रोल मिक्स है, ये ध्यान रखना, कंट्रोल्स आर मिक्स. दिस आर एलिवॉन्स, दिस इज नॉट सिंगल एलिवेटर और नॉट सिंगल एलरॉन्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. जिस साइड भी एलरॉन ऊपर होगा उस साइड प्लेन बैंग करेगा, सिंपल, उस साइड रोल होगा. अब रोल मोशन कैसा होता है, रोल में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. सिंपल रोल मोशन का मतलब है कि एयरक्राफ्ट तुरंत ऐसे 360 मूव हो गया, दिस इज. ठीक है, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री रोल. दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड रोल और 180 डिग्री रोल, एंड दिस इज कॉल्ड फुल कंप्लीट 360 डिग्री रोल और सिंपल रोल. ठीक है, सो 3 रोल मोशंस होते हैं, नॉर्मली 3 होते हैं, और भी आगे हैं कैटेगरी वाइज, मैं आपको बताता चलूंगा. अभी आपकी एक्सिस पे, जो आपकी एक्सिस है उस पे रोल कितने तरह के हैं. यदि आप पूरे हार्ड स्टिक राइट लेते हैं, सो दिस विल बी टोटल कंप्लीट 360 डिग्री रोल. इफ यू आर टेकिंग हाफ स्टिक रोल, नॉट हार्ड स्टिक, HARD हार्ड स्टिक नहीं लेते हैं. ठीक है, एंड इफ यू आर टेकिंग हाफ, HALF हाफ स्टिक राइट, हाफ स्टिक का मतलब है इट विल गो इन्वर्टेड लाइक दिस. ठीक है, थोड़ा सा बैंग कर दें लाइक फॉर 50% और 25%, सो इट विल गो लाइक दिस वन. ठीक है, सो कितने तरह के रोल हुए, एक हुआ आपका 90 डिग्री रोल, दिस वन, फिर हुआ 180 डिग्री इन्वर्टेड रोल, एंड दिस इज फुल कंप्लीट 360 डिग्री रोल. ठीक है, दिस इज 360. ठीक, दिस इज इन्वर्टेड और 180 डिग्री, एंड दिस इज 90 डिग्री रोल और हाफ रोल. दिस इज हाफ रोल. ठीक है, दिस इज क्वार्टर रोल, दिस वन. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं रोल में भी. सी दिस रोल मोशन. दिस इज कंप्लीट 360 डिग्री रोल, और ये बहुत ही पुरानी एक एंशिएंट एयरक्राफ्ट की वीडियो है. ट्राई टू गेस द नेम ऑफ दिस एयरक्राफ्ट.
ठीक है, एंड कमेंट इन द लाइव चैट और इन द कमेंट सेक्शन. ठीक, दिस इज अ वेरी पॉपुलर एयरक्राफ्ट, बट आई होप पता नहीं कितने लोगों को इसका नाम पता होगा. ट्राई टू फिगर इट आउट द नेम एंड सर्च अबाउट दिस एयरक्राफ्ट लुकिंग एट द फिगर. दिस इज द रोल मोशन. ठीक है, टोटल 360 डिग्री रोल. फिर आता है बैरल रोल. दिस इज F-22 रैप्टर. ठीक है, यूएस एयरफोर्स. अब बैरल रोल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो पायलट बहुत आलसी है और दिस इज अ ट्रिक. दिस इज एक्चुअली अ ट्रिक इन डॉग फाइट. आप मिसाइल से बचने के लिए ट्रिक यूज करते हैं. नॉर्मल रोल में आप वहीं के वहीं उसी एल्टीट्यूड में रोल कर लेते हैं. एल्टीट्यूड मुश्किल से थोड़े से फीट पे चेंज होता है. लेकिन बैरल रोल का मतलब क्या होता है? बैरल रोल का मतलब ही यही है कि आप पूरा घूम के नीचे से हैं, लाइक दिस. ठीक है, दिस इज बैरल रोल. मतलब आप अपने एक्सिस पे टर्न नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट टर्निंग ऑन योर एक्सिस, यू आर टर्निंग कंप्लीटली राउंड अबाउट, जस्ट लाइक अ वाइन ड्रम. दिस वन ऐसे. दिस इज कॉल्ड बैरल रोल, दिस वन. ठीक है, आप एक सर्कल बना रहे हैं, यू आर मेकिंग अ सर्कल. दिस इज कॉल्ड बैरल रोल. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दिस इज बैरल रोल, जहाँ पे आपका एल्टीट्यूड चेंज होता है बहुत ज़्यादा, ड्रास्टिक चेंजेस आता है. एंड सिंपल रोल में आप अपने एक्सिस पर रोल करते हैं. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल कंप्लीट मनूवर. ये हार्ड स्टिक से आता है. क्या कहते हैं आपका रोल. दिस थिंग इज कमिंग फ्रॉम हार्ड स्टिक. बट पायलट यदि स्टिक को हल्का हल्का करे, बहुत इजी करे नीचे, मतलब 13 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री ऐसे करके बहुत इजी स्टिक को करे, तो इजी का मतलब क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के जाएगा. सो इट विल मेक अ बुलेट लूप लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बैरल रोल. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट, दिस इज अगेन द F-22 रैप्टर. ठीक है, वन ऑफ द लीथल एयरक्राफ्ट इन कॉम्बैट मिशंस, एंड दिस इज कॉल्ड अ पावर टर्न. इसको थोड़ा ध्यान से देखो एंड ट्राई टू इमेजिन कि क्या क्या कंट्रोल सर्फेसेस यूज हुए इसके पीछे टू परफॉर्म दिस मैनूवर. आई होप अभी तक गेस कर लिया होगा आप लोगों ने कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है. ठीक है, आई विल गिव यू अ हिंट. मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली किया कैसे है. प्लेन सीधा आ रहा था. ठीक है, कंट्रोल सर्फेसेस सीधे हैं. फिर उसने हल्का सा बैंक लिया दिस साइड. ठीक, हल्का सा बैंक लिया मतलब एलेरॉन्स राइट हैंड साइड के ऊपर उठे थोड़े से. उसने हल्का सा बैंक लिया. ठीक, फिर एक 90 डिग्री रोल परफॉर्म किया. ठीक है, यहाँ पे उसने एक 90 डिग्री रोल परफॉर्म किया. फिर अपने एलिवेटर्स को फुल हार्ड अप कर दिया. दिस वन, बोथ द एलिवेटर्स फुल हार्ड अप विथ थ्रॉटल फुल पावर आगे. थ्रॉटल को आगे पुश करने से क्या हुआ, उसने एक तरह की ड्रिफ्टिंग की इन एयर. दिस इज अ ड्रिफ्ट और अ पावर टर्न. ठीक है, वो ऐसा आया जब तक कंट्रोल सर्फेसेस सीधे थे. देन ही परफॉर्म दिस वन 90 डिग्री टर्न. फिर उसने एलिवेटर पूरे हाई कर दिए. एलिवेटर हाई करने से ऊपर की तरफ नोज हाई हो गई. सो दिस थिंग ऐसे हुआ. ठीक, यू कैन सी दिस. यूं आया, बैंक हुआ, एलिवेटर हाई हुए. ठीक है, फिर सीधा हो गया. दिस इज कॉल्ड पावर टर्न. इमेजिन करने की कोशिश करो. ट्राई टू इमेजिन दिस थिंग. जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू फिगर इट आउट. कितना भी आप एनिमेशंस देख लो, यू वोंट बी एबल टू फिगर इट आउट कि हुआ कैसे. सो दिस इज द कंट्रोल ऑफ बोथ द सर्फेसेस, एलेरॉन्स एंड एलिवेटर्स टुगेदर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज कॉल्ड अ पावर टर्न. ठीक है, देन एक और स्पेशलाइज टर्निंग आती है, दैट इज कॉल्ड इमेलमैन टर्न. ठीक है, और इन्वर्टेड एस स्प्लिट. दिस इज कॉल्ड इमेलमैन टर्न और इन्वर्टेड एस स्प्लिट. एस स्प्लिट का मतलब क्या होता है, या ये इमेलमैन टर्न का मतलब क्या है, प्लेन सीधा जाएगा, इट विल गो वर्टिकली हाई. ठीक, परफॉर्म अ पिच डाउन, वर्टिकल पिच डाउन परफॉर्म करेगा. ठीक है, फिर एलेरॉन से बैंक करेगा और फिर सीधा हो जाएगा. सो द एयरक्राफ्ट इज गोइंग लाइक दिस, नोज हाई, टेक, पिच डाउन, फिर एलेरॉन टर्न एंड देन सीधा. अगेन सी दिस, सीधा गया, ऊपर गया. ठीक है, टर्न हुआ, फिर यू टर्न हुआ, फिर सीधा हुआ. कहने का मतलब ये है कि पहले सीधे सीधे ऊपर जाएगा, फिर इन्वर्ट हो जाएगा टर्न लेने की वजह से, पिच डाउन करने की वजह से, फिर अपना मोशन वापस रिट्रीव करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन.
So if you see in fast, it will look like this. This one, U, and this thing. This is called emalment turn. Simple. ठीक है, इसको हम inverted S split भी कहते हैं. Inverted S split. अब S split क्या है या split S क्या है? See this. कुछ नहीं, यदि आप नीचे से ऊपर जाते हो सो इट इज इन्वर्टेड एस स्प्लिट या इमैलमेंट टर्न, और आप ऊपर से नीचे आते हो तो इट इज कॉल्ड स्प्लिट एस. ठीक है, दिस वन. आप ऐसे गए, आपने इन्वर्ट किया, आपने फिर नोज डाउन किया, फिर आप सीधे हुए. ठीक है, सी दिस, गोइंग दिस वे, टर्निंग. ठीक, सी गोइंग दिस वे, टर्निंग, देन डाउन, स्ट्रेट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट एस. उल्टा स्प्लिट एस बना रहे हो, हाफ. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर. फिर आता है कोबरा टर्न. दिस इज वन ऑफ द डेडलीस्ट टर्न्स. इसमें पायलट को बहुत ज़्यादा जी प्रेशर सर्वाइव करना होता है, बहुत ही ज़्यादा. कोबरा टर्न इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी टर्न कि आपको लग रहा है कि आपके पीछे एक और एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो देयर इज अ डॉग फाइट. ठीक है, इमेजिन देयर इज अ डॉग फाइट एंड माई एडवांस हेलीकॉप्टर और चॉपर, सॉरी नॉट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट इज टेलिंग मी फ्रॉम बिहाइंड. मेरे पीछे एक बंदा है जो मुझ पर फायर कर रहा है, कंटिन्यूस फायर कर रहा है. ठीक है, मुझे पता है कि मैं और उसकी स्पीड ऑलमोस्ट सेम है. आई कैन नॉट डॉज हिम लाइक दिस, क्योंकि मैं ऐसे करूंगा वो भी ऐसे कर लेगा. आई विल गो दिस वे, ही विल गो दिस वे. सो व्हाट आई विल डू इज, ठीक है, मैं आगे आते क्या करूंगा, अपने पूरे थ्रस्टर्स को जीरो कर दूंगा. थ्रस्टर्स पूरे जीरो कर दूंगा और हाई, नोज हाई कर दूंगा. तो इससे होगा क्या, जैसे मैं यूं आऊंगा, थ्रस्टर जीरो करके नोज हाई करूंगा, तो ये मेरे नीचे से निकल जाएगा, मैं ऊपर खड़ा हो जाऊंगा ऐसे वर्टिकली. ठीक है, उसके बाद व्हाट आई विल डू इज, मैं अपने थ्रस्टर्स को वापस पावर दूंगा, फुल पावर दूंगा, फिर वो हल्का सा नोज डाइव करके उसके पीछे डाइव करूंगा. सो होगा क्या, जो चीज़ मेरे पीछे आ रही थी, द थिंग दैट वॉज कमिंग बिहाइंड मी, इट विल सडनली गो फ्रॉम बॉटम एंड आई विल बी कमिंग बैक ऑन हिज टेल. तो मेरे लिए उसको टारगेट करना आसान हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड अ कोबरा टर्न. जैसे ये कोबरा बनता है जस्ट लाइक दिस, कि आपने ऐसे जाके फन फैलाया एंड वापस आप नीचे घूम के उसके टेल पे आ गए. दिस इज कॉल्ड द कोबरा टर्न. एंड द Sukhoi 34, what you are seeing right now, the Su-34, this is the flanker of NATO, right? And this is the specialist aircraft that can perform the Cobra turns very good. Just because of its thrust to weight ratio, it has twin engine capacity, and F-34 also, Raptor can also perform this Cobra turn. So due to this only, the T-50, the flying tank of Russia, the Sukhoi 34, the F-24 Raptors, all the twin jets, those who have front control surfaces just like Rafale and Eurofighter Typhoons, they can perform the Cobra turn. Not all the aircrafts are capable of performing Cobra turn. ठीक है, तो ये याद रखना. कुछ ही पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट्स हैं जो कोबरा टर्न्स परफॉर्म कर सकते हैं. पहली चीज़, आपके पास ट्विन इंजन होना चाहिए, आपके पास एक्सटेंडेड फ्रंट कंट्रोल सर्फेसेस होनी चाहिए. ठीक है, जस्ट लाइक यूरोफाइटर टाइफून और यूएस एयरफोर्स F-24 रैप्टर. ठीक है, या Sukhoi 34, Su-34 या T-50 ऑफ रशियन एयरफोर्स, T-50. ठीक है, दीज आर द few of the aircrafts that can perform this thing. And even our Indian Air Force Sukhoi 30 MKI can perform a Cobra turn. ठीक है, so this is a very crucial thing. Okay, I hope यहाँ तक आपको क्लियर है. ठीक है, एंड जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही, जो आपको टर्न्स क्लियर नहीं हो रहे, जस्ट आफ्टर दिस सेशन लेट मी नो इन द चैट, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू अगेन देयर. ओके, दिस इज इट फॉर टुडे. सो जस्ट हैव अ शॉर्ट रीकैप कि हमने आज कौन कौन से टर्न्स देखे हैं, एंड आपका आज का असाइनमेंट क्या है. ठीक है, दैट इज वेरी क्रूशियल असाइनमेंट. ओके, फ्रॉम हियर, नॉर्मल टेक ऑफ, ठीक, 90 degree vertical takeoff like this, you're going like this, vertical takeoff, easy going. ठीक है, फिर आपका रोल मोशन, ठीक, फिर आता है आपका 90 डिग्री रोल, दिस वन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैंकिंग. फिर आता है 180 डिग्री रोल, देन आता है फुल कंप्लीट 360 डिग्री रोल. ठीक है, फिर आता है आपका बैरल रोल, यस दिस वन, पूरा नीचे से ऐसे ऊपर आना, दिस वन इज कॉल्ड बैरल रोल. ठीक है,
Then your power turns, coming like this, taking a bank and just moving away like this, taking a sharp U-turn. This is also called a taking a sharp U-turn. Coming like this, banking, full high speed, full throttle, and then going like this. This is called the power turn. ठीक है? Then emallment turn, same, नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे. नीचे से शुरू करेंगे, then nose high, nose high, nose high, vertical takeoff, then bank on the back, then turning switch and going straight forward. This is called emallment turn or inverted split S or S split. Tick. Then comes the split S. You are going this way, turning, 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 totally inverted, nose down, and taking a loop and going again. This is called a loop. ठीक है? यदि आप ऐसे जाके यूं आ जाते हैं, this is called loop. This is circle loop. This one is called the circle loop. This one. ठीक है? This is called the circle loop. ठीक? This is called a simple loop. आप सीधे जाके यूं सीधा हो गए. That is called simple. Half circle, semi circle, और simple circle loop. ठीक है? Then comes the Cobra turn, the deadliest of all. You are going like this, full throttle 0, taking a headstand, then turning back the aircraft and following back that enemy aircraft. This is called the Cobra turn, the deadliest of all. ठीक? I hope आज के सेशन में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. एंड आपका जो असाइनमेंट है, द असाइनमेंट फॉर टुडे दैट यू हैव टू सबमिट बाय ट्यूसडे विथ योर एयरक्राफ्ट. ठीक है? विथ योर ग्लाइडर्स, नॉट एयरक्राफ्ट, योर ग्लाइडर. ठीक है? दैट इज, let me just pull up my screen, then I'll let you know what is your today's. Yeah, okay. I hope यहाँ तक सबको क्लियर है. जिस किसी को भी कोई डाउट है, प्लीज कम टू लाइव चैट एंड लेट मी नो. ओके, मिस्टर रोबोटेक, why every time I am seeing the chat and you are totally the red face? What is dog fight? ठीक है, डॉग फाइट का मतलब ही यही होता है कि आपके पीछे कोई है, ही वांट टू शूट यू डाउन एंड यू आर जस्ट डॉजिंग हिम. दिस इज कॉल्ड द डॉग फाइट. ठीक है? दिस इज द डॉग फाइट. So let me see the questions what you have done. You have put it here. Sir, did we have to add ailerons to a glider also? That is totally your choice. ये टोटल आपके ऊपर है कि आप उसे चाहते हो कि नहीं चाहते हो. ठीक है? What is a dog fight? Please tell from the first session. I am asking you question and you have not told me. I'm really sorry if I missed your question. The dog fight is simple. कि if somebody is coming from behind and he is on your tail, he is following your tail and he want to shoot you down and you are performing, he is performing maneuvers to avoid that particular part. This is called the dog fight. When you are trying to hit a target, hit a chopper, hit a aircraft. So this fight between two aircrafts is called the dog fight. ठीक है? Are rudders used in this maneuver? Rudders are used in every maneuver. For example, आप ऊपर गए, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोबरा टर्न. ठीक है? आप इससे रडर को समझेंगे. जब आप सीधे आए एंड यू टुक द नोज आई, ठीक है, विद टर्निंग ऑफ योर इंजन्स, तो आप अभी यहाँ वर्टिकल स्टैंड कर रहे हैं. सो हाउ यू विल पुट योर नोज बैक टू द डाउन एंड फॉलो दैट सेम ट्रेजेक्टरी. उसके लिए आप क्या करेंगे? You will push your throttle up, turn the rudder to the direction you want to turn. ठीक है? आप रडर को टर्न करेंगे एंड नोज आपकी ऑटोमेटिकली रडर्स की वजह से नीचे आ जाएगी एंड यू विल बैलेंस योर एयरक्राफ्ट एंड गो बैक टू दैट एयरक्राफ्ट. सो हियर द रडर्स आर यूज्ड. और आप मोस्ट प्रोबेबली हर केस में हल्का हल्का रडर यूज करते हैं. You cannot leave the rudder control because rudders are very crucial. So it is used everywhere. ठीक है? So the next question. कहाँ गया? Yes. Can HAL Tejas perform Cobra maneuver? I am not sure. HAL Tejas, और जिनको नहीं पता, HAL, that is Hindustan Aeronautical Limited. Tejas is India's indigenous design. ठीक है? So this is a delta wing aircraft. So I cannot totally comment on this right now कि if it can perform a Cobra maneuver or not, because it's scramjet engine based. So I have not seen, to be honest, right now any pilot performing a Cobra maneuver on Tejas.
So I'm not sure if it is able to do it or not, but yeah, from its control surfaces and from the thrust to weight ratio, I think it can perform a Cobra maneuver, but it needs a gutted pilot to perform that, because not every amateur pilot can perform a Cobra maneuver, because it needs a lot of pressure to be sustained in the mid-flight. बहुत G forces लगते हैं. And the people who don't know about G forces, kindly Google it, because if I try to make you able to understand what is G force, it will take a lot of time. Okay. So the assignment for today is, listen carefully before I attend all other questions. The assignment for today is, you have to perform stunts, or you have to perform maneuvers with your paper airplane, and you have to shoot a video of that. ठीक है, आपको मिनिमम 3 maneuvers perform करने हैं. ठीक है, you have to name those maneuvers before performing, then you have to perform the maneuver, shoot that video and send it to us. This is your assignment for today, the 5th assignment, or you can say the 6th assignment, right? So आपको अपना एक paper airplane बनाना है. Whatever you design, like whatever the design you like, the F-16, this normal aircraft, the bat aircraft, the wing aircraft, whatever you like, whatever you feel like is easy for you to make that aircraft, make the proper control surfaces and perform at least 3 maneuvers. जो मैंने आपको बताया आज, that is not compulsory कि आप वही perform करें. You have to just perform 3 maneuvers. ठीक है, वो 3 maneuvers आप perform करेंगे in open space, shoot that video and send it back to us. ठीक है, दिस इज योर असाइनमेंट एंड इट शुड बी ए परफेक्ट मनूवर. ऐसा नहीं हो कि आधे अधूरे में हो गया, ठीक है, ठुक गया एंड आई डोंट हैव परफेक्ट स्पेस. यूज अ परफेक्ट स्पेस एंड परफॉर्म द मनूवर्स, राइट? सो दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे. आई होप यू विल एंजॉय दिस असाइनमेंट टुडे. ठीक है, सो Krishna technical all-rounder has already answered no, it is a single engine aircraft. Yes dear, it is a single engine aircraft. Tejas is a single engine aircraft, but still it has a greater thrust to weight ratio. That's why I said I cannot comment right now on the Cobra maneuver, because I have not seen any Tejas performing Cobra maneuver till now. So I cannot say anything. But yeah, might be it can perform, and the maximum cases are it cannot perform Cobra maneuver. Okay. Sir, did we have to add aileron to a glider also? That is totally your call. Yes. The crucial question, the most important question of all. Sir, where is the leaderboard? Leaderboard बनाने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, your assignment submission time. Whenever we are trying to make a leaderboard, whenever we plan to make a leaderboard, mails coming up, mails are coming to our inboxes, and we are not able to do it in the real time. So due to this particular problem, we won't be able to make a leaderboard, but when we declare the result, we'll make sure all the numbers and everything is public, so that everybody can see where your marks had been cut, in which assignment your marks is less, and how much you have performed in your practical assessment, and what was your performance during the sessions, and how was your marking in your quiz, your test. Okay, so right now we cannot do the leaderboard stuff, but yeah, I'll make the numbers public so that everybody can see how you have performed. Okay, I hope this is clear for you guys. Krishna is doing the same thing all over again, putting one single question every time. Okay, what are the assignment? Priyanka, I've already said. Done. Mr. Anonymous, you do not have to fly the aircraft holding in your hand just like this. This was a illustrative demonstration. आपको इसको फेंकना है. You have to toss it. You have to adjust the control surfaces so that it can perform the maneuvers. ठीक है? Agrima Khandelwal, how can we perform maneuvers in a paper glider? पेपर ग्लाइडर में भी आप परफॉर्म कर सकते हैं. दिस इज वेरी इजी. आपको सिर्फ कंट्रोल सर्फेसेस को लॉक करना है. इफ ये आपके कंट्रोल सर्फेसेस हैं, या जो कोई भी आप एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, आपको कोई भी मनूवर परफॉर्म करना है, जस्ट मेक श्योर आपके कंट्रोल सर्फेसेस लॉक्ड हो, प्रॉपरली बेंडेड हो, एंड जस्ट थ्रो इट इन द एयर. देन ओनली यू कैन परफॉर्म द कंट्रोल मनूवर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर डज इट हैव गुड टू ऐड? हो गया. दैट इज फाइन. या what is the second assignment? There is only one assignment for today. You have to perform maneuvers. ठीक है, 3 maneuvers with your paper airplane or with your glider if you have completed that.
and glider should be submitted before Tuesday. Glider and this assignment total, these two assignments should be submitted before Tuesday. ठीक है? So sir, the test will be live. Yes, the test will be live and based on timer settings. It will be on your browser. You have to give it on your browser. You cannot switch tabs. You cannot move your face because we'll be tracking from your camera. We'll be live monitoring each and every student. So, all those part. ठीक है? What is the second assignment? Power turn explain. Okay, power turn. और क्या पूछा है? What is the crosswing? हमने अभी विंग्स डिस्कस नहीं किए प्रॉपरली, ठीक है? एंड आई कैन नॉट टेल यू द डिज़ाइन ऑफ क्रॉसविंग बिकॉज यदि मैं आपको भी क्रॉसविंग समझाता हूँ इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर अदर स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ क्रॉसविंग्स और अ डेल्टा विंग और अ टी विंग और अ ट्रायंगुलर विंग और अ फ्लैट विंग रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री. So Sonia creation, what you can do is just put your question in the comment section after this video gets ended and I'll reply back to you in private. ठीक है? I'll reply back to your comment what exactly is the crosswing. ठीक है? I hope this is clear to you, Sonia. Okay, how do we give the live test? So test and timings would be disclosed after the question answer session. ठीक है? That is the second last session or the last session of your course. I'll explain you everything in detail, how you to log in, how you have to do the test and everything else. ठीक है? Don't worry about that. Just let me explain this power turn to Vishnu. ठीक है? Power turn समझो फिर से कैसे होता है. हम सीधे जा रहे हैं. All the control surfaces are straight. ठीक है? What is boomerang maneuver called in technical language? Okay, I'll tell you. पहले देखो पावर टर्न क्या होता है. ठीक है? पावर टर्न का मतलब क्या है कि आपको एक बैंकिंग टर्न लेना है. यू हैव टू टेक अ बैंकिंग टर्न. कैसे लोगे आप? यूं जा रहा है, ठीक, हल्का सा आप एलरॉन, दिस वन, एक साइड अप करेंगे एक साइड डाउन करेंगे, हल्का सा, नॉट कंप्लीटली. तो उससे क्या होगा, प्लेन ऐसे ऐसे जाते जाते हल्का हल्का टर्न होना शुरू होगा. जिस साइड अप होगा उस साइड डाउन होगा. ठीक है? हल्का सा डाउन होगा, दिस लाइक. ठीक है? आई होप यू आर एबल टू इमेजिन दिस थिंग. जिस साइड एलरॉन अप है, ठीक, उस साइड नीचे जाएगा प्लेन. ये नीचे जा रहा है, ठीक. अब प्लेन इस ज्योमेट्री में आएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पे आएगा और ये सीधे जाने की कोशिश करेगा. एंड पावर टर्न में क्या होता है, हम अपने एलिवेटर्स को, दोनों एलिवेटर्स को नोज हाई कर देते हैं एकदम से, इंजन की पावर फुल करके. जैसे हम इंजन की पावर फुल करते हैं तो वो एक ड्रिफ्ट मारता है. दिस इज व्हाट इट इज पावर टर्न. जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे नॉर्मल थ्रॉटल है और मैं एकदम से फुल थ्रॉटल देके फुल एलिवेटर दूंगा तो होगा क्या, इट विल टेक अ टर्न ऑन इट्स एक्सेस लाइक दिस. यू जाके एकदम से तेज यू टर्न लेगा. दिस इज यू टर्न जो ले रहा है, दिस इज यू टर्न. दिस यू टर्न इज कॉल्ड द पावर टर्न. इसमें बहुत ज़्यादा जी फोर्सेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है. जितना तेज़ आप मनूवर करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, जी फोर्सेस, क्या कहते हैं, जी फोर्सेस को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है. आपके बॉडी पे जी फोर्सेस बहुत ज़्यादा तेज़ लगते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपर्ट काइंड ऑफ मनूवर, राइट. एंड आई डू नॉट थिंक कि सारे पायलट्स इसको परफॉर्म भी कर पाते हैं इनिशियली बिकॉज यू नीड एटलीस्ट 100 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है? सो एक और शायद कोई टर्न होता है, दैट इज बैंकिंग टर्न, जहाँ पे आप हल्का सा रोल पिच करते हैं लाइक दिस वन. यू परफॉर्म अ रोल मोशन, यू टेक अ पावर, हाफ पावर टर्न, यू गो इन दिस वे एंड यू परफॉर्म अ वर्टिकल लिफ्ट. एक आप इन्वर्टेड एस बनाते हैं इस तरीके से. दिस इज ऑल्सो फॉर डॉजिंग एयर टू एयर मिसाइल्स. ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर पावर टर्न. अब किसी ने क्या कुछ बूमरैंग समथिंग कुछ पूछा था, वेयर इट इज. सो व्हाट इज बूमरैंग मैन्यूवर कॉल्ड इन टेक्निकल लैंग्वेज? I don't exactly remember what it is called in technical language. Boomerang maneuver. यदि याद आता तो मैं आपको बताता हूँ. शायद it is Brett Rattan something. It is called Brett Rattan or some kind of Puchgave Cobra maybe. I'm not able to recall that exact name. I think it is called Pugachev's Cobra or Brett Rattan boomerang turn.
Right, Pradyuman, just give me some time. I'll let you know exactly what it is. I'm not able to recall it right now. ठीक है? How to do controls on paper? जी फोर्सेस का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल पुल। आप जितनी तेज भागते हैं या जितनी तेज आप ट्रैवल करते हैं, आपके ऊपर एक चेस्ट पे प्रेशर पड़ता है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है या कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो जो आप फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं इंटरनल बॉडी में, दैट इज कॉल्ड जी फोर्सेस, ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू योर स्पीड एंड इनर्शिया। ठीक है, अब कई लोग पूछ रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल प्लेन्स। इसका सिंपल सा तरीका है, आप हार्ड पेपर यूज करिए थोड़ा सा, एंड इसको जब आप बैंग करके छोड़ेंगे, इट विल रिटेन अ पोजीशन लाइक दिस। इफ आई बैंक इट डाउन, इफ यू सी, इफ आई एम बैंगिंग इट डाउन, ठीक है, तो अब ये एक रिटेन कर लिया इसने पोजीशन। अब जब मैं इसको इस तरीके से थ्रो करूंगा, सो इट विल टेक अ वर्टिकल लिफ्ट। तो इसी तरीके से आपको ये मनूवर्स परफॉर्म करने हैं, एक एक सेट करके एंगल्स एंड पिचिंग को, तब जाके आप ये मनूवर्स परफॉर्म कर पाएंगे। और आपको और रेफरेंस चाहिए इस पे, यू कैन सर्च ट्रिक शॉट series on YouTube, so you will be able to know कि how people perform maneuvers with gliders. ठीक है, so this is the same part. Any other questions, guys? Please explain the assignment. See, I am giving you the assignment for today and explaining you again and again the same thing कि आपको सिर्फ करना इतना है, आपको पेपर एयरप्लेन बनाना है, या ये आपका ग्लाइडर कंप्लीट हो चुका है, so you have to make control surfaces on your glider, लॉक द कंट्रोल सर्फेसेस इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, जो भी आप मनूवर परफॉर्म करने चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में, एंड थ्रो द ग्लाइडर इन द एयर एंड लेट इट परफॉर्म। ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू मनूवर्स। सर, बट हाउ कैन वी डॉज मिसाइल्स लॉक्ड ऑन प्लेन थ्रू मनूवर्स? You can dodge missiles locked down from any particular range. It should depend on what kind of missile it is. If it is a heat seeker missile जो आपकी हीट को ट्रेस करता है, so उससे बचने के लिए हमारे पास फ्लेयर्स होते हैं जो आतिशबाजी करता है प्लेन, दैट आर कॉल्ड फ्लेयर्स। ठीक है, या कभी कभी आपको लगता है कि कोई बहुत एडवांस मिसाइल आपके पीछे, दैट इज अ हीट सीकर। सो जनरली व्हाट पायलट डू इज दे ड्रॉप द एक्सटर्नल फ्यूल टैंक ऑन द लैंड एंड इट क्रिएट्स अ ब्लास्ट। जो उससे हीट पैदा होती है वहां पे जाके वो एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है, दैट मिसाइल गेट ब्लास्टेड। सो दैट इज वन वे टू डॉज अ हीट सीकर। बट अ लेजर टैग मिसाइल, यदि वो लेजर कंट्रोल मिसाइल है जिसको पीछे का पायलट ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, सो इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ फ्यूल, उसका फ्यूल बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, इट कैन परफॉर्म अ फ्लाइट टाइम ऑफ नियरली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट ऑफ टाइम। ठीक है, उस बीच में यदि उसने आपके टारगेट कर लिया आपके एयरक्राफ्ट को, देन इट इज डन, और इफ इट इज नॉट एबल टू टारगेट इट विल ब्लो अप इन द एयर। सो यू आर परफॉर्मिंग मैन्यूवर्स जस्ट टू डॉज दैट पाथ ऑफ द मिसाइल। ठीक है, आप मैन्यूवर्स इसलिए परफॉर्म करते हैं, यू यूज योर फ्लेयर्स, यू यूज योर एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जस्ट फॉर दिस पर्पस। ठीक है, सर प्लीज डू वन कंट्रोल लाइव। ओके, लेट मी सी इफ आई एम एबल टू शो यू गाइज और नॉट। आई एम पुटिंग माई एलिवेटर्स टॉप हाई। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ एंड आई एम थ्रोइंग इट राइट नाउ इन दिस डायरेक्शन। लेट्स सी क्या होता है। सी, वो ऐसे गया, विंड नहीं थी यहाँ पे, कमरा, दिस रूम इज क्लोज, सो इट वेंट लाइक दिस एंड इट जस्ट वेंट डाउन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म इट। ठीक, आपको कंट्रोल्स लॉक करने एंड देन यू हैव टू डू ऑल दिस स्टफ। एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर डाउट्स? Okay, so that's all for today's session, and I'll make sure I'll explain you the boomerang, because this is something crucial. I exactly don't remember the technical name for this boomerang maneuver, but I think it behaves just like a boomerang because its name suggests so, right? If you throw an aircraft and it comes back to a round glide of spot, that is called a boomerang maneuver, aircraft maneuver. Okay. ठीक है, if you have any other questions just let me know so that I can address you right away, or just we'll close the session for today.
So does it good to add ailerons in a glider also? Yes, जितने ज़्यादा आपके कंट्रोल सर्फेसेस होंगे उतना अच्छा आपको मैन्यूवर मिलेगा. सिंपल सी चीज़ है. Okay, what is the next question? Can you please tell the channel? Which channel? This is the channel, Fizz Robotics Solution. Sir, does it good to have take it done showing control which you said? बेटा जब आप परफॉर्म करना शुरू करोगे then only you will able to know how to test with your control. This is your assignment, right? This is your practical assignment. Sir, name of the channel, Fizz Robotics Solution, on which this video is going live right now. And to perform, क्या नाम था? Yes, the trick shot series, from where you can learn how to perform these tricks. This is called, you can just search it on the net or just on the YouTube. It is called trick shot series. ठीक है, trick shot series. और क्या है बताओ? How can we perform a maneuver in a lockdown? I didn't said कि आपको रोड पे जाके मैन्यूवर परफॉर्म करना है. You can use your hall, you can use your rooftop, you can use your what you can say, you can use a balcony, make 3 aircrafts, throw the aircraft outside. But it does not mean I'm saying you to litter outside your campus, right? Just go down and collect your aircraft again and you can perform it, right? You just need some particular space only, a little bit of control space. Right? Sir, how can we perform a maneuver in lockdown? Done. Sir, why does a boomerang come back? Okay. This I'll address you in the next session. I'll just cover this topic also. You have given me a good topic right now. A boomerang. Boomerang just behave like an airfoil. अब बूमरैंग में कोई मोटर या कोई प्रोपेलर तो होता नहीं है कि वो उसको कंटिन्यूस मोशन में रखे. एंड वेन एवर यू थ्रो बैक अ बूमरैंग इट जस्ट कम बैक बिफोर आपके साइड क्यों आ जाता है वापस? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एरोफॉइल एंड द मोशन इन विच यू आर थ्रोइंग. कभी भी आप बूमरैंग को सीधा फेंक के देखना, इट वोंट कम बैक. बट एज सुन एज यू थ्रो इट ऑन योर वर्टिकल हाइट, जस्ट लाइक अ ट्रायंगुलर प्लेन, आप सीधा फेंकते हो वर्टिकली, तभी वो ग्रेविटी की वजह से और उसके एयरफॉइल की वजह से वापस आता है. दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सप्लेनेशन फॉर बूमरैंग. जयचंद श्रीवास्तव, व्हाट इज पावर मोशन? पावर मोशन का मतलब ये होता है कि वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ मनूवर, ठीक है, वेन एवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ मनूवर, लिफ्ट और एनी काइंड ऑफ स्टंट, ठीक, एंड वेन एवर यू आर यूजिंग योर थ्रॉटल टू द मोस्ट, आप जब मैक्सिमम थ्रॉटल यूज करते हैं, आप इंजन पावर मैक्सिमम यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ पावर मोशन और अ लीप पावर मोशन. ठीक है. सुपर स्मार्टी डीसी, दैट चैनल नेम इज कॉल्ड, आई एम जस्ट लेट मी राइट इट डाउन द क्वेरी. दिस इज कॉल्ड द ट्रिक शॉट सीरीज. I have just given it, right? Dude Perfect, exactly. This is called a Dude Perfect series. क्या बात है anonymous, सारे चैनल फॉलो कर रहे हो आजकल. Nice. Dude Perfect. ठीक है. सो बूमरैंग वाला टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे एंड आई होप आई हैव कंप्लीटेड ऑल द पॉइंट्स फॉर टुडे. Jayachan Srivastava, I have already given the assignment. Please be little khopadi and dimag here on this channel, this video. Okay. So, और कुछ, any other questions? चैनल के नाम मैंने लिख दिए, Dude Perfect Trick Shot Series. Just look on to that and make your video. ठीक है, उनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं. They are doing a very good job. ठीक. So that's all for today guys, and I'll promise I'll cover the boomerang session. I'll try to teach you how to make a boomerang also in next session on Tuesday. Till then, complete all your assignments, all your pending assignments, send it back to us and let's see what we are up to. And I want your gliders by Tuesday anyhow. ठीक है. Today's assignment is again you have to make a paper airplane and perform 3 maneuvers. Stunt maneuvers, basic maneuver, any kind of maneuvers, right? So that's all for today guys. Thank you very much for coming and attending this session, and those people who are totally new to this channel, please make sure you subscribe this channel so you get proper and regular updates. Take care. Thank you so much guys. Take care. Start flying your helicopters, your
aircrafts, your gliders, your paper airplane, whatever you have at your home. Use your space perfectly. Enjoy this time. Learn this maneuvers. Right? It will give you a very good crunchy knowledge about aircrafts. So that's all for today. Thank you. Stay safe. Take care. Jai Hind. Fly high.